Evening, everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चल, all right. So let's start with our session. अब MHCET के point of view से हमने एक already एक session conduct कर लिया था, wherein we solved the questions related to Constitution of India only. ठीक है? Constitution related questions को हम आगे के sessions में भी cover up करेंगे, but यहाँ पे हमारा आज primarily target ये है कि हम mixed bag of questions को solve करेंगे, which means you will find questions from your law of torts, law of crimes, certain questions related to your law of contracts as well. कुछ लीगल टर्म्स या लैटिन मैक्सिम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास होंगे। तो आज इन सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 सेशंस जो हम कंडक्ट करेंगे, 4 से 5 सेशंस जो हम कंडक्ट करेंगे लीगल के स्पेसिफिकली, उनमें हम सारे डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट जॉनरास ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, चले तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। आज हमारे पास 45 क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बट एमएचसीईटी में हमेशा या इन सारे ओलेट एग्जामिनेशन में हमेशा वो 0.01% या 0.2% चांसेस होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question which we have is what is the difference between lease and a license? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारा प्राइमरली what is the difference between lease and a license? So A is saying lease grants exclusive possession while a license does not. B is saying a license grants exclusive possession while a lease does not. C is saying both grant exclusive possession but a lease is for a shorter duration. And D is there is no significant difference between lease and a license. So what's the correct answer, guys? क्या करेक्ट आंसर है भैया हमारा? हाँ जी, ठीक है। देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते हैं ना, जिसको लेकर आपके पास कोई भी एक बेसिक आइडिया नहीं है, तब फिर आप एलिमिनेशन के मेथड को यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो। ठीक है, देन इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन ट्राई टू यूटिलाइज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। लीज हमें इतना पता है कि लीज इज अ कॉन्सेप्ट which is related to transfer of property. Yes or no? इतना तो मेरे ख्याल से आप सबको आइडिया होगा, है ना? एंड जब भी प्रॉपर्टी रेंट पे ली जाती है, whenever an immovable property is taken on rent beyond a certain duration of time, तो उसको हम लीज कहते हैं। Yes or no? राइट? अब जब कोई पर्सन रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहा होगा, तो फिर वहां पर उस पर्सन को एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मिलेगा। यस और नो? क्योंकि रेंट पे प्रॉपर्टी लेने का मतलब ही होता है दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनरशिप वहां पर ट्रांसफर नहीं होती, बट पोजीशन तो ट्रांसफर किया जाता है। लाइसेंस होता है जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी को कुछ स्पेसिफिक यूज उसका अलाउ करते हो। ठीक है, लाइसेंस बेसिकली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक यूज अलाउड विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी। वहां पर एक्सक्लूसिव पोजीशन आपको नहीं मिल जाता है। भाई मेरी गाड़ी है, मान लो मेरे पास एक कार है, उस कार को मेरा फ्रेंड भी यूज कर सकता है, तो क्या मैंने वो कार लीज पर उसको दे दी है? नहीं ना। मेरे पास मान लो एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मैंने कहा है कि ठीक है जब तुम्हें जरूरत लगे तुम आके रुक जाना। क्या मैंने उसको एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं दे दिया है? नहीं, मैंने उसको एक तरीके से लाइसेंस दिया हुआ है। ठीक है, so the primary difference between lease and license is option A, that a lease grants exclusive possession while a license does not. ठीक है, so the correct answer in question number 1 was option A. चल, let's move to the next one. Let's solve the second question, guys. ये वाला सबसे बनना चाहिए। ठीक है, so the question is what are the essential elements of a valid contract? What are the essential elements of a valid contract? फिर ना कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए क्लैट के पर्पसेस या इलेट के पर्पसेस के लिए भी रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, नॉट एवरी क्वेश्चन बट या सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रेलेवेंट। ठीक है, हाँ जी। So what are the essential elements of a valid contract? Everyone, just let me know your answer in the chat box. So the essential elements are correct. Offer, acceptance, consideration, free consent, and lawful object. These are the primary essentials which are required to create a valid contract. So the correct answer over here was option A. Negotiation जरूरी नहीं है, परफॉर्मेंस एसेंशियल में काउंट नहीं होता है।
है ना. देन कंसेंट की बात की, बट फ्री वर्ड यहां से मिसिंग था. तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ ऑल द फोर ऑप्शंस ए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट था, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल? What is the doctrine of estoppel? Now, estoppel as a concept, evidence law में भी discuss किया जाता है. Estoppel as a concept is utilized under promissory estoppel in your law of contracts, है ना. Promissory estoppel में भी हम उस चीज को यूज करते हैं. तो estoppel का क्या करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर? The correct answer is, in question number 3, the correct answer is correct. This is the principle that prevents a person from denying the truth of a statement previously made. Okay, so the correct answer over here was option A. Chalo, let's move to the next one, guys. Next question को देखते हैं. So what is the principle of uti possidetis juris? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काइंड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स लैटिन मैक्सिम है. ठीक है, काइंड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स लैटिन मैक्सिम है, बट व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? So the correct meaning of uti possidetis juris is the principle that the boundaries of a newly independent states should generally respect the colonial boundaries. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट करके रख सकते हो, और जिन लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है, वेरी गुड, दिस वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट वन, एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी. ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now, the next question is, no confidence motion to be admitted in Lok Sabha needs the support of. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में थे. एग्जैक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं था, बट रिमूवल रेजोल्यूशन ऑफ सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दोनों चीजें न्यूज में थी, तो उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में, है ना. सो नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड in Lok Sabha needs the support of how many members? जब एडमिशन की बात हो रही है ना, तो एडमिशन का मतलब ये है, we are actually looking at the required number which is needed over there for the purposes of introducing a no confidence motion. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के इंट्रोडक्शन का वहां पर बात हो रही है. तो व्हाट्स द करेक्ट आंसर in question number 5th? The correct answer is option D. ठीक है, चल, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following refers to a legal document that allows someone to act on behalf of another person? ठीक है, question क्या हमारा, कि which of the following refers to a legal document that allows someone to act on behalf of another person? A, will, B, contract, C, power of attorney, or D, deed. What's the correct answer in question number 6? हाँ जी, 6th में करेक्ट आंसर क्या है? The document which will allow a person to act on behalf of another person is actually power of attorney. A को एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, बट ए कंट्री के बाहर है, तो वो दूसरे इंडिविजुअल के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी को क्रिएट करेगा, एंड देन बी कैन सेल दिस प्रॉपर्टी टू अनदर इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ ए. ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पावर टू अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं बेटा. ठीक है, so the correct answer in question number 6 was, the correct answer in question number 6 was option C. ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब ये क्वेश्चन सबको बनना चाहिए. ठीक है, हम टॉट्स के रिस्पेक्ट में इसको डिस्कस ही करते हैं. ठीक, नाउ व्हाट इज एन ईजमेंट? हाँ जी, व्हाट इज एन ईजमेंट? द राइट टू यूज अनदर पर्सन्स लैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, द राइट टू ओन प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, the right to sell property to another person, or D, the right to inherit property from a deceased person. What is the correct meaning of easement, guys?
हाँ जी, the correct meaning of easement is, so easement basically refers to a right of a person to use another person's land for a specific purpose, जहां पर उसमें right to वे एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कि अपनी प्रॉपर्टी पे एंटर करने के लिए आप किसी को और की प्रॉपर्टी से एक रास्ता यूज करके अगर निकल रहे हो, वेर इन यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो जो दूसरे पर्सन की आपने प्रॉपर्टी एंजॉय करी है उसको हम ईजमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रियट? What is the doctrine of parents patriarch? A, the power of the state to act as the guardian of individuals who cannot legally represent themselves. B, the principle of separation of power between legislative, executive, and judicial branches. C, the doctrine that allows for the amendment of the constitution. And D, the principle of equality before law. प्रेरणा बेटा, राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होगा ही नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है बेटा गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए, सरकार बदलने के लिए। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के हिसाब से द काउंसिल ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। तो राज्यसभा में तो कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होता ही नहीं है, एंड इस वजह से वहां पर कोई मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, so the correct answer of the doctrine of parens patria is that it is the power of the state to act as the guardian of individuals who cannot legally represent themselves, like minor, the mentally ill, and so on and so forth. ठीक है, so the correct answer was option A. चलिए, let's move to the next one. Now, the next question is, as a general rule of law, a contract is discharged when? As a general rule of law, a contract is discharged when A, the contract becomes illegal, B, a party refuses to perform, C, the obligations are fulfilled, or D, a new contract is formed. What's the correct answer in question number 9th? हाँ जी, 9th का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज, देखो डिस्चार्ज के वैसे ना मोड्स बहुत सारे होते हैं, बट नॉर्मली डिस्चार्ज का मतलब होता है where the performance of the obligation is completed। कि जिस भी चीज का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर देना, उसको परफॉर्म कर देना, उसको डिस्चार्ज कहा जाता है, जनरल रूल। डिस्चार्ज वैसे फिर एक्सेप्शन सिचुएशन में अलग अलग तरीके से भी होता है, जैसे नोवेशन से होता है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एक चीज होती है, बट क्वेश्चन नहीं हमें हिंट दे दी थी दैट एज अ जनरल रूल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिस्चार्ज होगा। सो वहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, दैट व्हेन द ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट का हमारा डिस्चार्ज होता है। ठीक, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर टॉर्ट लॉ a nuisance is categorized as, under tort law, nuisance is categorized as A, private and public nuisance, B, civil and criminal nuisance, C, voluntary and involuntary nuisance, D, strict and absolute nuisance. What's the correct answer? Tort में जब हम पढ़ते हैं ना lawful interference with the use and enjoyment of the property of another person, तो उस nuisance को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा? A, B, C और D? What's the correct answer in question number 10th? The correct answer is correct. प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। देखो टॉर्ट में न्यूसेंस को हमने दो कैटेगरी में रख देना है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक न्यूसेंस को क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिश किया जाता है। प्राइवेट न्यूसेंस में टॉर्ट में एक इंडिविजुअल कॉम्पनसेशन ले सकता है, बट एक इंडिविजुअल पब्लिक न्यूसेंस के केसेस में भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो अपनी स्पेशल इंजरी वहां पर प्रूव कर दे कोर्ट को तो। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस में तो एक इंडिविजुअल केस फाइल करके कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा ही। पब्लिक न्यूसेंस की सिचुएशन में भी इफ द प्लेंटिफ इज एबल टू प्रूव देयर स्पेशल इंजरी टू द कोर्ट, वहां पर पब्लिक न्यूसेंस के मैटर में भी कॉम्पनसेशन आपको अवॉर्ड किया जाता है। ठीक है,
चलिए, let's move to the next question. Now, the next question is under the under which article of the Constitution of India equal pay for equal work is given? क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी प्रोटेस्ट हुए थे, लेबर कोड लास्ट ईयर पास किए गए हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। अब तो मैंने आंसर ही बता दिया एक तरीके से, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? हाँ जी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहां दिया हुआ है? करेक्ट, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 39D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। दिस टॉक्स अबाउट एजुकेशन, है ना? आर्टिकल 44 ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो यूसीसी के बारे में, ठीक है? आर्टिकल 39D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरली डील्स विथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है? क्लियर एवरीवन? चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now, the next question is, under the Hindu Marriage Act of 1955, the minimum age for marriage is under the Hindu Marriage Act of 1955, the minimum age for marriage is A, 18 years for men and 18 for women, B, 21 for men and 18 for women, C, 21 for men and 21 for women, and D, 18 for men and 16 for women. What's the correct answer in question number 12? Anji, the correct answer is B, beta. Okay. When we talk about the essentials of a valid marriage, which are given under section 5 of the Hindu Marriage Act 1955, वहां पर the groom is required to be 21 years old and the bride is required to be 18 years old. दोनों की मैरिज एज वहां पर सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी, ठीक है? चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Which article deals with amendment of the Indian Constitution? A, Article 356, B, Article 368, C, Article 370, or D, Article 395? Anji, what's the correct answer? Which article of the Constitution deals with amendment? Correct. It is Article 368 of the Constitution of India, which deals with amendment. Okay? Chalo, let's move to the next one. 356 to beta is related to precedent rule. Constitutional emergency जिसको हम कहते हैं या जिसे हम state emergency कहते हैं, वो 356 में, ठीक है? Amendment is given under Article 368 beta. चलिए, let's move to the next one. The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 relates to A, fundamental duties, B, Panchayati Raj, C, right to property, and D, President's power. What's the correct answer? The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 relates to A, fundamental duties, B, Panchayati Raj, C, right to property, and D, President's power. इस क्वेश्चन को हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, है ना? ये वाला गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट बेटा, करेक्ट. The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 relates to Panchayati Raj, ठीक है? The correct answer over here was option B. हम बस सिंपल सी चीज याद रखो, 1992 में हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दिया, ठीक है? पंचायत को दिया गया बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट, म्युनिसिपैलिटीज को दिया गया बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके पर्पसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शेड्यूल भी ऐड किए गए. 11th शेड्यूल वाज एडेड
dealing with the list of subjects which panchayat will manage, and 12th schedule of the constitution was added to list out the number of subjects which municipalities will regulate. Okay? So the correct answer in question number 14 was option B. Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, a minor enters into a contract to purchase a car. Later, he refuses to make the payment. What will be the legal consequence? A minor enters into a contract to purchase a car. Later, he refuses to make the payment. What will be the legal consequence? A, the contract is valid. B, the contract is voidable. C, the contract is void ab initio. And D, the contract is valid if the minor's guardian consents. So the correct answer is माइनर पेमेंट नहीं कर रहा है मतलब आप माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना भाई, है ना? माइनर पेमेंट नहीं कर रहा है मतलब आप माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे थे. And whenever you will try to enforce a transaction against a minor, such a transaction is considered as void ab initio, that is from the beginning. Okay? So the correct answer in question number 15 was option C. Okay? Chaliye, let's move to the next one. Now, voyeurism as an offense means what? Voyeurism as an offense means what? A, eve teasing. B, sexual assault. C, sexual harassment. Or D, a man watching or capturing the image of a woman in private acts. What's the correct answer? Voyeurism एक offense होता है, ठीक है, बट वो क्या है? eve teasing है, sexual assault है, sexual harassment है, और a man watching or capturing the image of a woman engaged in a private act है. Correct, 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 correct everyone. Voyeurism के offense को अगर हम देखें, so it's an offense where a man watches or captures the image of a woman in a private act. ठीक है, उसे हम offense of voyeurism कहते हैं. ठीक, चलिए, let's move to the next one. Now, the next question is, Article 5 of the Constitution of India deals with what? Article 5 of the Constitution of India deals with A, the Union, B, citizenship, C, fundamental duties, or D, none of the above. Article 5 of the Constitution of India deals with A, Union, B, citizenship, C, fundamental duties, or D, none of the above. So the correct answer is correct, correct, correct. Article 5 deals with citizenship beta. Citizenship का simple सा याद रखो. This is given under part 2 of the Constitution of India, and part 2 primarily runs from Article 5 to Article 11 of the Constitution. ठीक है? So the correct answer over here was option B. चलिए, let's move to the next question then. Now, the next question is, in law, a man is presumed to be dead if he is not heard for. In law, a man is presumed to be dead if he is not heard for A, 5 years, B, 12 years, C, 14 years, or D, 7 years. That is the primary discussion point about this question is about the presumption of death. कि भाई वो presumption of death law में कितने साल के बाद आता है? So the correct answer is हाँ जी. What's the correct answer? The correct answer is correct. The presumption of death basically comes into existence when a man is not heard for a period of 7 years. ठीक है, 7 साल तक अगर आपके बारे में किसी भी ऐसे पर्सन ने नहीं सुना है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के आपके बारे में सुन चुका होता कुछ ना कुछ, ठीक है, तब आपको प्रिज्यूम डेड माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ. ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, stalking as an offense means. Stalking as an offense means A, illegally storing, B, insulting a lady, C, illegally following a woman and attempting to contact her, and D, irritating a lady. What's the correct answer? हाँ जी, स्टॉकिंग किस ऑफेंस को माना जाता है भाई? हाँ जी,
So the correct answer is correct, correct. Stalking का मतलब होता है when you illegally try to follow a woman and attempt to contact her, तब उस ऑफेंस को स्टॉकिंग की कैटेगरी में माना जाता है। ठीक है, एक वुमेन को फॉलो करते रहना, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, डिस्पाइट हर रिजेक्शन, उस सारी चीजों को स्टॉकिंग की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। नाउ अंडर आर्टिकल 24 of the Constitution of India, no child shall be employed to work in any factory or mine who is below the age of, under Article 24 of the Constitution of India, no child shall be employed to work in any factory or mine who is below the age of A 14 years, B 16 years, C 18 years, or D 21 years. What's the correct answer? हाँ जी, आर्टिकल 24 के हिसाब से मिनिमम एज क्या है वहां पर? द मिनिमम एज इज correct. Article 24 basically comes under head of protection against exploitation. ठीक है, और उसमें से भी अगर हम आर्टिकल 25 की बात 24 की बात करें तो 24 बेसिकली डील्स विद द टॉपिक ऑफ चाइल्ड लेबर, जहां पर जो मिनिमम एज है, ठीक है, दैट एज इज 14 years. So under Article 24 of the Constitution, no child shall be employed to work in any factory or mine who is below the age of 14 years, guys. ठीक है, चलिए let's move to the next question then. Now the next question is, which of the following is true? Which of the following is true? A, penal law always have retrospective effect. B, person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. C, person shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once. And D is none of the above. So इन सारे statements में से कौन सा statement correct है भाई? What's the correct answer? हाँ जी, the correct answer is, which of the following statement is true? The correct answer over here is beta option C. This particular thing deals with your Article 20, Clause 2 of the Constitution, which talks about double jeopardy. Yes or no? है ना? That no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Compelled गलत चीज है, यहां पर नॉट लिखा होना चाहिए था, तभी यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर आ जाता, जिसको हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं. Penal laws always having a retrospective effect. This is incorrect, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इसी चीज से तो हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस. यस और नो? सो द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर वाज ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, the next question is, the person making the proposal is called A, promisee, B, promiser, C, promise, and D, none of the above. What's the correct answer? The person making the proposal is called as, that person is known as promiser. Correct. ठीक है, प्रपोजल जिसने दिया वो promiser, जिसको प्रपोजल दिया गया, the person to whom the proposal was given, वो promisee बन जाता है. ठीक है, चलो, all right, correct guys. Let's move to the next one. Now the next question is, under Article 236 of the Constitution of India, the expression judicial service means, under Article 236 of the Constitution of India, the expression judicial service means all the staff working in the courts, all the officers of registry at the district court, a service consisting exclusively the post of district judge and other civil judicial posts, D, none of the above. What's the correct answer? अब क्वेश्चन क्यों रेलेवेंट है ये वाला, तो वो 3 year प्रैक्टिस रूल के बारे में आप सब लोगों ने भी सुना होगा, है ना? दैट 3 year प्रैक्टिस रूल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लोअर जुडिशरी में 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी थी. उसी के बाद
आप वहां पर सिविल जज का एग्जाम दे सकते थे. That was related to the post coming under Article 236 only. And the correct answer over here was option C. That is, the expression judicial service means a service consisting exclusively the post of the district judge and other civil judicial posts. Okay? Chalo. Let's move to the next question. Now, the question is, there are two statements. The first statement is, a person can be governor of two or more states. The second statement is, the governor shall hold office during the pleasure of the prime minister. So what's the correct answer over here in question number 24th? Hanji, what's the correct answer? 24th में क्या correct answer है भाई? Now, the correct answer in question number 24th is, let's look at this statement. A person can be governor of two or more states. This is correct. This is possible. एक ही इंडिविजुअल दो अलग अलग स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है. The second statement is that the governor shall hold office during the pleasure of the prime minister. This is wrong. The governor holds the office during the pleasure of the president. ठीक है, president appointing authority है वहां पर, and the governor holds the office at the pleasure of the president only. So the correct answer was option A. That A is correct, but B is not correct. ठीक है, so the correct answer was option A. चलो, let's move to the next question. The next question is, concurrent list is given in. Concurrent list is given in A. Schedule 4th of the Constitution, B. Schedule 5th of the Constitution, C. Schedule 6th of the Constitution, and D. Schedule 7th of the Constitution. What's the correct answer in question number 25? Anji, 25th का correct answer क्या है हमारे पास? Concurrent list कौन से schedule में given है? 4th, 5th, 6th और 7th? अरे ये वाला तो बनना चाहिए भाई. The correct answer is 7th schedule. देखो 7th schedule में वो तीनों लिस्ट दी हुई है. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. वो तीनों लिस्ट आपकी 7th शेड्यूल में ही गिवन है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 25th वाज ऑप्शन डी. 4th schedule deals with allocation of seats in Rajya Sabha. 5th and 6th schedule are related to scheduled and tribal areas. ठीक है, 7th schedule deals with the federal provisions जहां पर वो तीनों लिस्ट आपकी मेंशन है. ठीक है, चलिए, let's move to the next one. Now, the next question is, the burden of proof means what? Burden of proof means what? A, the person who asserts must prove that those facts exist. B, person against whom allegations are leveled must prove that those allegations are false. C, person who has the evidence with him. And D, B and C above. So what's the correct answer in question number 26? Anji. All the three lists are mentioned over there, beta. Okay. Now, burden of proof basically lies upon the person who asserts a particular thing. If you are going to the court with a particular assertion, ठीक है, अगर आप कोर्ट जाकर कुछ assert कर रहे हो ना कोर्ट में, the burden of proof lies upon you, that you have to prove everything in the situation over there. ठीक है, so the correct answer over here was option A. भाई प्लेंटिफ जाता है ना सिविल सूट में केस फाइल करने के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ के ही ऊपर तो होता है. दैट प्लेंटिफ इज सपोज्ड टू प्रूव एवरीथिंग इन द कोर्ट. भाई अगर वो कह रहा है कि सामने वाला पर्सन नेग्लिजेंट था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है. आपने क्राइम में किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस लगाए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है कि इसने क्राइम कमिट किया? प्रोसिक्यूशन के ऊपर. यस और नो? सो द पर्सन हु असर्ट्स must prove that those fact exist
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज गिवन इन the principle of doctrine of eclipse is given in A. Article 13, which talks about laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. B. Article 14, which talks about equality before law. C. Article 15, which talks about prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Or D. Article 17, which talks about abolition of untouchability. What's the correct answer? Doctrine of eclipse किस article से related है? Correct, correct, correct. Very good. Doctrine of eclipse is primarily related to Article 13 of the Constitution of India, जहां पर उसका relationship primarily pre-constitutional laws से है. ठीक है, जहां पर उसका relationship pre-constitutional laws के साथ है. चलो, let's move to the next question. Now, consent is said to be free when it is not caused by. Consent is said to be free when it is not caused by A. Coercion, B. Undue influence, C. Fraud, and D. All of the above. What's the correct answer? Anji, consent is said to be free when A. Coercion, B. Undue influence, C. Fraud, or D. All of the above. What's the correct answer? Correct, 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 correct. Very good. The consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, everything. Okay? So the correct answer over here was option D, that is all of the above. Okay? Chal. Let's move to the next question. Now, the next question is when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Okay? When person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Now, a proposal when accepted becomes A agreement, B contract, C promise, or D agreement to sale. What's the correct answer in question number 29? Anji, a proposal when accepted becomes what? Correct, Adya. Correct, 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 correct. Offer plus acceptance results into a promise. ठीक है? Promise when combined with consideration results into an agreement. When the agreement is enforceable, that becomes a contract. ठीक है, ये सिंपल आपका फॉर्मूला काम करता है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज robbery. The next question is robbery. A, in all robbery there is only theft. B, in all robbery there is only extortion. C, in all robbery there is either theft or extortion. And D, none of the above. So what's the correct answer in question number 30? Anji, 30th का correct answer क्या है भाई? The correct answer is correct. Correct. The correct answer is option C. देखो रॉबरी अपने आप में कोई अलग ऑफेंस नहीं है. ठीक है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉबरी बनते हैं. तो थेफ्ट में अगर फोर्स यूज हुई है तो वो रॉबरी बन जाता है. एक्सटॉर्शन में अगर फिजिकल प्रेजेंस है और ऑफ फियर ऑफ इंस्टेंट हार्म है, फियर ऑफ इंस्टेंट हार्म है,
तो उस तरीके के एक्सटॉर्शन को हम रॉबरी बुलाते हैं। यस और नो? तो द करेक्ट आंसर वाज इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। चलिए भाई सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सो ऑबिटर डिक्टा, सब साइलेंशियो, स्टे डिसाइसिस, पर इंक्यूरियम। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज, हाँ जी, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज, अरे मैच द फॉलोइंग नहीं हुआ अभी तक। क्या करेक्ट आंसर है भाई? करेक्ट, 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 वेरी गुड। The correct answer is option D. Obiter dicta is having a persuasive value. Sub silentio refers to particular legal point not being discussed. Stare decisis is about stand by the precedent, and per incurium means resulting from ignorance. ठीक है? So the correct answer over here was option D. चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं फिर जल्दी से। ये वाला तो और इजीली बन जाना चाहिए। दिस इज तो रिलेटेड टू योर रिट्स ओनली। ठीक है? और जो रिट्स हमें दी हुई है दैट इंक्लूड्स मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, सर्चोररी एंड प्रोहिबिशन। चलो इसको भी जल्दी से मैच द फॉलोइंग इसका खत्म करो भाई। ठीक है बेटा यार रॉयल, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो ना बेटा, कहीं और जाओ, अच्छा पढ़ो कुछ। ठीक है? चलिए भाई, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? चलो सो mandamus refers to we command, habeas corpus is you may have the body of, ठीक है? Prohibition is to prohibit an inferior court, and certiorari refers to be certified of. So A, 2 and B, 4. The correct answer was, अच्छा C भी हमें देखना पड़ेगा, C 1। The correct answer was option C। ठीक है? 30 सेकेंड का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी बेटा, बी नहीं आएगा। मैंडेमस इज वी कमांड, सो ए टू, मतलब ये दोनों तो नहीं हो रहे। हेबियस कॉर्पस यहां पर दिया हुआ है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं ऑप्शंस को ध्यान से नहीं रीड कर पाया। द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी बेटा। ठीक है? ठीक, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेटेड है, सिंपल सा मैच द फॉलोइंग है, जल्दी से इसको भी खत्म कर लो। uh, नहीं तो बस डोंट हैव टू लर्न ऑल द मैगजीम्स फॉर योर क्लैट एंड एलिट एग्जामिनेशन। आपके आरएसएम्स में जो स्टार मार्क्ड हैं, ठीक है, उन मैगजीम्स को बस आप रीड करके रख लो, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है? चलो, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20 क्लॉज 3। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, वहीं पे खत्म हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, फ्रॉम डबल पनिशमेंट आर्टिकल 20 क्लॉज 2, एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। ठीक है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now, the next question is, Constitution Day is observed in India on which day? Constitution Day is observed in India on which date? A. 26th January, B. 15th August, C. 26th October, या D. 26th November? What's the correct answer, guys? Constitution Day किस डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट, करेक्ट। एंड इस डेट पे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे को? बिकॉज ऑन दिस डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट डेट है ये।
या डेट ऑफ अडॉप्शन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, ठीक। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है हमारा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस, cognizable offense means an offense A, in which a police officer may arrest without a warrant; B, which may be investigated by police without order of a magistrate; C, in which police cannot grant bail; D, cognizance of which can be taken by magistrate upon police report only. So what's the correct answer in question number 35th? किस तरीके के ऑफेंस को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं? हाँ जी, 35th का करेक्ट आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर द काइंड ऑफ ऑफेंसेस जहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, एंड पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। वहां पर वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। Now, under which article does the President of India have the power to consult the Supreme Court for its opinion on any question of law or fact of public importance? Under which article does the President of India have the power to consult the Supreme Court of its opinion on any question of law or fact of public importance? Correct, correct, correct. Very good. This particular statement was related to advisory jurisdiction of the Supreme Court of India, है ना, जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को देखें तो तमिलनाडु वाला वर्डिक्ट था, ठीक है। So the correct answer is that advisory jurisdiction is given under Article 143 of the Constitution of India, ठीक है। चल, let's move to the next one. Now, the doctrine of eclipse in constitutional law relates primarily to what? In a way, हमने इसका आंसर डिस्कस कर ही लिया है ना, हमने आंसर इसका डिस्कस कर ही लिया है। So, the doctrine of eclipse is in Constitution of India primarily relates to what? Just a second, guys. चल, हाँ जी, the correct answer is it's not specifically related to the power of judicial review, बेटा। वो फंडामेंटल राइट्स और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, इन चीजों को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स गवर्न करती है, ठीक है। आर्टिकल 13 के ही अंडर आ जाती है वो चीज, बट उसका रिलेशनशिप प्राइमरली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, जहां पर ये कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंडर that the FRs will create a kind of an eclipse on the pre-constitutional law. They will exist for all the past transactions. ठीक है, उनको void ab initio नहीं माना जाएगा, वो past transactions के लिए exist करेंगे, बट फंडामेंटल राइट्स का उनके ऊपर एक एक्लिप्स रहेगा एंड दे विल नॉट बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian law was the first to introduce the concept of public interest litigation through judicial innovation rather than the legislation? Which Indian law was the first to introduce the concept of PIL through judicial innovation rather than legislation? A, Constitution of India; B, Environment Protection Act of 1986; C, Supreme Court Rules of 1976, ठीक है, and D, there is no specific statute, it was introduced by judicial precedent. हाँ, तो बस अगर वहां पर ऑप्शन नहीं होता तब फिर हम एक ही तरफ चले जाते। The correct answer in this question is option D. There is no specific statute. किसी लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस उसको किया ही नहीं गया, ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट ही था, एंड दैट केस वाज just a second, guys, है ना, that case was the case of
Just a second. हाँ, that case was the case of Husainara Khatun versus State of Bihar. Husainara Khatun versus State of Bihar. तो किसी लेजिस्लेशन के थ्रू वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, वो एक केस के थ्रू ही वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया. करेक्ट. लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, the next question is the concept of judicial review in the Indian Constitution is borrowed from which country? The concept of judicial review in the Indian Constitution is borrowed from which country? A. United Kingdom, B. United States of America, C. Australia, and D. Canada. जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया? हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया? करेक्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज एक्चुअली बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और रिट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया था भाई? कहां से इंस्पिरेशन ली थी हमने रिट्स के कॉन्सेप्ट की? जुडिशियल रिव्यू तो यूएसए से हो गया. करेक्ट. जुडिशियल रिव्यू केम फ्रॉम यूएसए. रिट्स का कॉन्सेप्ट का हमने इंस्पिरेशन कहां से लिया था? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ. हाँ जी, द इंस्पिरेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स वाज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो जुडिशियल रिव्यू आया यूएसए से, रिट्स का कॉन्सेप्ट आया यूनाइटेड किंगडम से. ठीक है, इस चीज को याद रखना, वो यूके से आया. ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जस्ट अ सेकंड. या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's upcoming population census scheduled for March 1st, 2027 will introduce which major feature for the first time in the country's history? India's upcoming population census scheduled for March 1, 2027 will introduce which major feature for the first time in the country's history? A. Biometric identification of every resident, digital data collection and caste enumeration, C. Voting rights surveys for all citizens, and D. Universal Aadhaar enrollment during census. So the correct answer is correct, correct, correct. The digital data collection and caste enumeration is going to be a new feature. Okay? Chali. Let's move to the next question. Now, the next question is, which social media platform has recently filed a lawsuit in Karnataka High Court challenging the government of India's interpretation of Section 79(3)(b) of the IT Act? थोड़ा सा tricky question है. Question is primarily related to the challenge which was posed against the सहयोग portal. Hint दे देता हूं मैं. वहां पर primarily यही section involved था, but case related था towards challenging the constitutional validity of the सहयोग portal, and the case was filed by correct X, which was formerly Twitter. ठीक है, चलिए let's move to the next question. Now the next question is the doctrine of lashes relates to which area of law? The doctrine of lashes relates to which area of law? A. Delay in filing a case में bar relief, B. Compulsory acquisition of land, C. Separation of powers, or D. Equality before law. What's the correct answer? Doctrine of lashes is related to which area of law? Anji. The correct answer in question number 42 is correct. The correct answer is beta option A. Delay in filing a case में bar the relief. ठीक है, वो जो लिमिटेशन लॉ का भी हम नाम सुनते हैं ना कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है या सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, उसके साथ साथ जो एक और डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है उसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस कहते हैं. ठीक है, कि भाई अगर आपने रीजनेबल टाइम पीरियड में केस फाइल नहीं किया, ठीक है, सो द डिले इन फाइलिंग ऑफ द केस में बार द रिलीफ एज वेल. ठीक, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, which of the following communities is expressly excluded from the applicability of the Uttarakhand UCC? Which of the following communities is expressly excluded from the applicability of the Uttarakhand UCC? A. Residents working abroad,
B, scheduled tribe of the state, C, foreign tourists, and D, non-resident Indians from other states. What's the correct answer? किस कम्युनिटी को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया उत्तराखंड के यूसीसी के अंडर? करेक्ट, 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 करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज इट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट्स. वो एक एक्सप्रेस एक्सेप्शन के फॉर्म में वहां पर गिवन है. ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ, under which legal provision have Assam police registered a complaint against Ranveer Alavadia and Samay Raina in February 2025 for alleged obscene remarks on a YouTube show? असम पुलिस ने किन सेक्शंस के अंदर अलावादिया एंड समय रैना के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी फॉर एलिजेड ऑब्सीन रिमार्क्स ऑन द यूट्यूब वीडियो? लेटेंट कंट्रोवर्सी तो सबको याद होगी, है ना? समय रैना ने भी रिसेंटली एक वीडियो में पोस्ट किया था कि स्टिल अलाइव, राइट? तो किस सेक्शन के अंडर वो फाइल हुआ था? देखो, इट वाज प्राइमरली फाइल्ड अंडर सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. असम पुलिस की एफआईआर प्राइमरली यहां इस सेक्शन से रिलेटेड थी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Now, the last question is, according to Article 1 of the Constitution of India, which of the following is not included in the expression union of states? ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करना. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल 1 में जहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स दिया गया, ठीक है, सो यूनियन ऑफ स्टेट्स में किस एक्सप्रेशन को या किस तरीके की टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया? A, the states, B, the union territories, C, the acquired territories, and D, none of the above. What's the correct answer? I can understand tempting hota hai D, but the correct answer over here is union territories. जब यूनियन ऑफ स्टेट्स एक्सप्रेशन को यूज किया गया आर्टिकल 1 में, उसमें स्टेट्स को इंक्लूड किया गया एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज को भी इंक्लूड किया गया. ठीक है, यूटीज पर से वहां पर एज सच इंक्लूडेड नहीं है. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी बेटा. ठीक है, एंड नॉट डी. आर्टिकल 1 के टेक्स्ट को आप रीड करना कभी, वहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है वो चीज वहां पर एक्सप्लेनेशन में गिवन है, एंड एक्सप्लेनेशन के अंडर इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द यूनियन ऑफ स्टेट्स will include union, the states and the acquired territories. ठीक है, चलो. सो आज के क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है, चलो. नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हम प्राइमरली या तो मिक्स बैग या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड रखेंगे. दोनों में से जिसकी भी जरूरत हो, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर सेशन चाहिए हो, मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस चाहिए हो या कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चाहिए हो, once we are done with this session, once this stream is over, just let us know in the comment section. ठीक है, तो मिक्स बैग या जो भी आप लोग रिप्लाई कमेंट में बताते हो, उसके बेसिस पे हम अगला वाला सेशन अलाइन कर लेंगे. ठीक है, हाँ जी बेटा, आज के सेशन के लिए इतना ही. बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम एज वेल. ठीक है, बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much.